Viewers, it's been 2 days since the Pran Pratishtha and Ram devotees have lined up at Ayodhya to get their first glimpse of Ram Lalla at his Janmabhoomi. On day one alone, 5 lakh devotees offered Darshan at the temple, and the crowds are such that the administration has had to extend the timings for the Darshan till 11 at night. But even as the entire country is celebrating the arrival of Lord Ram, Rahul Gandhi seems to think otherwise. The former Congress president claims there's no wave or Ram Leher in India. But what took place on Tuesday was just a political program and a Modi show. ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। But Rahul Gandhi's comments couldn't be further from the truth. Because take a look at how the Ram temple was celebrated across India, not just on the day of Pran Pratishtha, but subsequently from Parsis to members of Muslim community, members of all faiths came together to celebrate Pran Pratishtha of Ram Lalla. From tribals, backward, OBCs, you name it. Ram Mandir was the one thing that not only had people of all hues and community rejoicing, but special effort was made to ensure that every community found representations in the rituals themselves. The ceremony also saw people from all walks of life unite to celebrate the auspicious occasion. There were actors, superstars like Amitabh Bachchan, Rajinikanth, actors like Jackie Shroff, Ayushmann Khurrana, Vicky Kaushal, Alia Bhatt, cricketers, Anil Kumble, Sachin Tendulkar, legal luminaries that included 4 former Chief Justices of India, eminent personalities, all graced the auspicious occasion of Pran Pratishtha. But these are the celebrities. You want to see the Ram Leher? That Leher is visible on the ground among the people who have turned up from Kashmir to Kanyakumari, from Guwahati to Gujarat, only in order to ensure that they get one glimpse of Ram Lalla. Watch this. श्रद्धालु ही श्रद्धालु है। किस तरह देखते हैं इसको? वो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि एक दो साल और इस तरह करेंगे तो समझिए कि ये राम मंदिर तो बनिए गया, ज्ञानपापी भी कृष्ण का भी बन जाएगा। इस तरह वो करते रहे, पूरा राममय है, कहीं कुछ नहीं है, सब लोग राम का भक्त है। यहाँ कहीं कुछ नहीं है, चले जाएंगे वो, पूरा राममय है। जहाँ से आए राहुल गांधी वहाँ चले जाएंगे वो। तो आपको लगता है पॉलिटिकल कमेंट? हाँ, पॉलिटिकल है, उसमें कुछ नहीं है, पूरे राम का भक्त है। यहाँ कोई वो कुछ नहीं है कि जो ये सोचे कि राम जो है सो समझिए कि किसी का, वो सब किसी के राम अंदर बसते हैं। वो किसी पार्टी जो करती है, भक्त लोगों को सब राम है, राम के लिए हम लोग आए हैं, राममय है सब कोई। His supporters are not allowing him to get a pulse of the nation. I feel he will see a Ram Pralay in these elections. He will see we'll have a historic election this year, and this is going to be a changing election for the nation as well. People from all across the nation are thronging to Ayodhya to have a glimpse of Ram Lalla. This is contrary to what Rahul Gandhi said. He said that there is no Ram Leher. In fact, this is a BJP's political program is what he said. In fact, I'm joined by a lot of people, especially this man who has come from Australia for 3 days, especially to visit Ram Temple. So where exactly in Australia have you come from? Namaskaram. I'm Rahul. I'm from Australia. I've been living in Perth for about 10 years now. So a comment has come from Rahul Gandhi. He said that there is no Ram Leher, but all around me it is evident that lakhs of devotees have come here. How do you see this comment? I think he is living in isolation. He does not have the vibe of the nation at the moment. His supporters are not allowing him to get a pulse of the nation. I feel he will see a Ram Pralay in these elections. And to no one's surprise, the BJP has called out Rahul Gandhi and said that such comments will get a befitting reply, not from anyone else, not from political opponents, but from the people of India. Let him live in his world of illusions. That's all what I can say. I think the entire country, all communities are united in endorsing the Ram temple. I think this is the beginning, that's the Prime Minister says, and it's a beginning of a long journey of uniting the country. There is no more battles, no more wars. I think Ram is going to be a huge unifying force. After all, if 85% of Indians believe in Ram,
and we build a temple for him, I think that would be a place of unity. And from where I think we're going to start a long journey. And I'm extremely happy that this has been done, and I've written about it also. He has also stated that there is no Ram Leher in the country. There is nothing as such. This was all the BJP's political program when it comes to the Ram Mandir inauguration. Some questions are left best answered by the public of the country. And the time to answer them is not very far away, madam, and public of the country, the people of the country will give a befitting answer. Let's take this across to the guests. Joining us now, Vijay Shankar Tiwari, National Spokesperson of the Vishwa Hindu Parishad, Vivek Bansal, Senior Leader of the Congress, and Dr. Sumanth Raman, Political Analyst. Do you not see a Ram Leher, Mr. Vivek Bansal? 8 lakh people in 48 hours. Padmaja, let's Ram Leher is obviously the majority of this country are sizable, absolute majority of this country are devotees of Ram, and so it's a matter of, you know, when the Ram temple is being consecrated, definitely they are coming to pay their reverence, obedience to the Ram temple, to their Aradhya. Ram is their Aradhya, so no big deal about that. So that they are bound to be enthusiastic, but Rahul ji can't see a Ram Leher. He was asked specifically that a Ram Leher is sweeping across the country. He says, "Koi leher veher nahi hai." Let me just complete it. You have to decide between Ram Leher or the devotees coming here to see this, to be a witness to this consecration ceremony, and from the fact that the people who are going to vote for that, how their political wisdom is going to be different. It cannot be just identified with this reverence or with this obedience or with their devotedness towards Lord Ram. So that is here I would like to I would say that we have to differentiate between the two. The political wisdom, political astuteness, or casting their vote or pitching in for any political party is different from what they are. And I don't. विजय शंकर तिवारी, ये राम की लहर है, कोई बीजेपी की लहर नहीं है. बीजेपी और वीएचपी अपनी लहर बना रहे हैं इसको. पद्मजा, मैं पिछले 10 दिन से मैं अयोध्या में था और मैंने देखा कि वहां पर सारी बाधाएं, किसी भी कोई अमीरी नहीं, कोई गरीबी नहीं, किस वर्ग से हैं, किस क्षेत्र से हैं, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, देश के संपूर्ण हिस्से से वहाँ पर राम भक्त आए थे वो. और आपने देखा जब अभी परसों वहाँ कार्यक्रम हुआ और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो वहां पर एक वो व्यक्ति भी अंदर था, वो भी न्योता गया था, उसको भी निमंत्रण था, जिसने 10 रुपए दिए थे. एक वो भी व्यक्ति वहां पर था जो भिक्षा मांग करके और उसको 20 रुपए मिले, 10 रुपए भगवान राम के लिए समर्पित कर दिया. वहां वो भी थे जो देश के पद्मश्री थे, वो भी थे जो पद्म विभूषण थे, यानी हर वर्ग के लोग वहां पर थे. और वो लोग भी थे जिन्होंने उस मंदिर की नींव खोदी. वो श्रमिक, ऐसे 250 श्रमिक थे जिनके आधार पर यह मंदिर बन रहा है. और उनकी आस्था देखते बनती थी. आप तो कैमरे से के माध्यम से देख रहे होंगे, सारा देश देख रहा था. लेकिन एक दुर्भाग्य हमारे देश का है कि राम राज्य किनके नाम पर आया. दुनिया भर में लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज्य हमारे देश में हो, और भारत में बिना राम के राम राज्य की बात करते हैं ये. लेकिन राजनैतिक स्वार्थ के चलते दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश में जो कहते हैं राम मेरे मन के अंदर हैं, राजनैतिक केवल स्वार्थ के कारण भगवान राम के अस्तित्व को यहां नकारा गया. लेकिन आपने परसों देखा, मंच से 2-3 बातें बहुत प्रमुख हुई. एक बात यह हुई कि राम समाधान है, यानी अगर देश में किसी चीज का समाधान करना है राम के माध्यम से होकर जाता है. और दूसरा कहा कि कटुता छोड़ करके, जो भी कटुता निर्माण हुई है, कटुता छोड़ करके सद्भाव की तरफ बढ़ने का आज समय है. और तभी दुनिया के सामने हम आज शक्तिशाली बने हैं और शक्तिशाली बनना चाहिए. लेकिन वो सद्भाव के बिना कैसे होगा. तो राम सद्भाव सिखाते हैं और सद्भाव का प्रतीक राम है. तो राम लहर नहीं है, राम लहर नहीं है. तो आप लाखों लाख करोड़ों लोगों के बीच में आपने देश का उत्साह देखा है. वो राम लहर Sumanth Raman. And among some of the people that we heard over there, they were saying very clearly, irrespective of political party, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे. In the minds of the people, they are saying one person or a government made it a reality. In their mind, that's the impression. Okay.
Padmaja, first of all, I would say that the question itself is wrongly phrased. Rahul Gandhi was referring perhaps to a political wave. Now, is there a fervor or wave in favor of Lord Ram? Is not in dispute. 8 lakh people are worshipping. There are lakhs more who want to worship. That is a religious fervor. And the point that Rahul Gandhi was mentioning very likely was, is there a Ram Leher, which basically translates into, is this going to be reflected in the election? Because after all, he's a politician. He's not a religious person to be asked a question about religion. So you're going and asking this question to devotees who are coming there to worship is actually quite mischievous, because that is not the context in which this question was asked. This question was asked to a politician, a political leader, and his answer relates to a political equation. So therefore, from a religious perspective, are you saying there is a Ram Leher or there isn't a Ram Leher? There is a Ram Leher. From a religious context, of course there is. I mean, I see it in South India also, that there is a fervor and there is a keenness to go and have darshan in Ayodhya. But here's the thing, let's listen to one of the people who spoke. Here's the thing, you are questioning why are the two being conflated, and thank you for your analysis of a mischievous question that has been asked. But the reason we picked that up is what Govind Giriji Maharaj said from the podium after the Pran Pratishtha, and in his words he spoke of why the whole idea of jo Ram ko laaye hain is being spoken of today. Listen. और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। So Mr. Bansal, here you have Govind Giriji Maharaj saying that, well, if somebody has worked for Sanatan, it is the Prime Minister. Like Shivaji Maharaj. No, he has every right to say that, but is it a political farman? Is it a political dictate, or is it a political message that, or that people are going to abide by that he says? You know, people of India, this country, are able to very well differentiate between politics and religion. So to say that whatever he says, that is, people are going to adhere to that, or just to be guided by that or motivated by that, I would beg to differ. Definitely, as you see, these two things cannot be mixed or. Okay, they cannot be mixed. फिर से वही विजय शंकर तिवारी, फिर से वही बात हो रही है कि एक तरफ लहर है, बट वो सिर्फ रिलीजियस लहर है, उसको ये जो पॉलिटिकल ट्विस्ट देने की कोशिश ये काम नहीं करेगी। जैसे कि आज एक थैंक यू मोशन, एक धन्यवाद प्रस्ताव हुआ कैबिनेट के अंदर, जो कि राजनाथ जी ने मूव किया, उसके बाद सबने उसका समर्थन किया, एक थैंक यू धन्यवाद प्रस्ताव भी पास किया गया कि चलिए राम टेम्पल की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये पॉलिटिसाइजेशन लोग नहीं मानेंगे। विजय शंकर तिवारी, देखो पद्मजा, जो हमारे विचार के विरुद्ध जो सोचते हैं वो ऐसा कहेंगे, लेकिन एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं होती तो क्या आज श्री राम मंदिर बन जाता? क्या प्राण प्रतिष्ठा हो जाती? क्या कदापि नहीं होती। कुछ पक्ष में रखता हूं, निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करना था, उन्होंने किया, लेकिन कुछ उसकी आवश्यकताएं थी जो सरकार ने प्रदान करनी थी। तो कांग्रेस सरकार रहते हुए, अन्य सरकारों रहते हुए, वो जो आवश्यकताएं पूरी करनी थी वो सरकारों ने नहीं पूरी की। एक और बड़ा विषय, 34,000 पृष्ठ अलग अलग भाषाओं में। पद्मजा 30 सेकंड। Let Mr. Tiwari complete, then I'll come to Mr. Bansal. विजय जी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, 30 सेकंड बस। एक विवेक जी 30 सेकंड। मैं कहता हूं 34,000 पृष्ठ का वो अभिलेख जो अलग अलग भाषाओं में था, जब तक उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके अदालत के सामने नहीं रखा जाता तब तक ये निर्णय संभव नहीं था। वो आज तक सरकारों ने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, जो वास्तव में उनको श्रेय जाता है। और अगर वो पृष्ठ उसमें अनुवादित नहीं होते
तो भी निर्णय में संकट था। ओके, तो मिस्टर बंसल को जाता है, मिस्टर बंसल, और ये श्रेय आप भी ले सकते थे, वो श्रेय कोई भी पहले भी जो आप अनुदित करने हैं उससे पहले भी रखेगा। हाई कोर्ट ने जब जजमेंट पास किया था, आप कृपया करके उसका अवलोकन करें। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, ये मेरे ख्याल से अतिरंजित बात होगी कि इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ की हिसाब, और जो भी सरकार होती है उसका दायित्व होता है कि सही जो चीज है उसको। हाँ, देखो एक मिनट पद्मजा जी बोलिए। पद्मजा, एक निर्णय आया, ताला खुलवाने का एक निर्णय आया, और उस निर्णय की भरपाई करने के लिए एक गरीब मुस्लिम महिला को उसका अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो इन्होंने संसद में आकर पलट दिया। उसको जो उसके अधिकार मिलने चाहिए तो नहीं मिले, उसकी भरपूरी काज कर रहे थे ये। तो मैं कहता हूं अगर निर्णय ये भी न्यायालय का था, लेकिन न्यायालय की जो अभिपूर्ति होनी थी, जो उनकी आवश्यकताएं थी, वो सरकार को करनी थी, वो कांग्रेस सरकार ने नहीं किया कि उनकी इच्छा ही नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के 24 वकील जो सीधे सीधे राम मंदिर, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? उनके कारण बाधा पहुंच रही थी। Well, ultimately the people are going to be the judge, but here we have Anurag Thakur actually speaking of how inside the cabinet also the thank you motion was passed on the Ram Mandir. Let's listen in. Thank you very much, gentlemen, for joining me.